Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 8. The name of the paper is Morphology and Syntax. The name of the chapter is Morphology, and the topic we are doing is complex derivations. This lecture is specifically for the students of BS English 3rd semester GDC PABI, and it is also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. In the previous lecture, we discussed some problematic cases, and then comes the topic of derivation. But we are not doing derivation from here. I have already shared with you the derivation topic which we did from YOL, and you can learn it from there. However, this diagram is important, and you can include this diagram in that lecture from George Yule. This is a tree diagram, for example. In the analysis of words, you have this whole word as a noun, treatment, which is a combination of the verb treat and the affix meant. Then you have the adjective unkind, which consists of the affix un and the adjective kind. Adjective again, seasonal, which consists of the noun season and affix al. Then you have the verb modernize, consisting of the adjective modern and the affix. So this diagram can be included there for the analysis. It's a good one. At least 3 diagrams are given here. There are some derivational affixes also. If you want to learn them, you can. If you want to, for example, al, it converts the verb as it is derivational. It converts the verb into a noun. For example, refuse is a verb. If you put al as an affix with it, it becomes a refusal, which is a noun. Then you have some prefixes converting noun to noun, or verb to verb, or adjective to adjective, and so on. So the topic for today is the complex derivation, and in complex derivation we will learn that this process of affixation, that is adding affixes with the bases or with the roots, this can be applied more than once. For example, if we take this word act, which is a verb, and we add IVE with it, this verb is changed to adjective, active, and this is one process. It can be done more than once. This was once. Now let us do it again, twice. For example, with active, which becomes base for 8, you add this suffix and it becomes activate. So it is then now more than once, that is twice. It can still be done again by adding ION with it, and activate will be converted into activation. So it's thrice. So you may have 3 levels or 3 layers. This is the first layer, this is the second layer, this is the third layer. So you can see that derivation can be applied more than once, and this is here done more than once, 3 times. However, if you look at this example, the example of unhappiness, this tree diagram is different from this tree diagram because unhappiness can be analyzed in 2 ways. The first is when you first make the word unhappy and then add ness with it, and the second is when you add ness with it first, changing it into happiness, and then adding un, changing it into unhappiness. This is a kind of problem. However, we will learn that the key observation is that the prefix un combines freely with adjectives, and happy is adjective, so it can combine freely with un. Therefore, this first diagram is a more accurate diagram by saying that unhappiness, the whole of it is a noun, but it consists of unhappy first,
and then ness. So we are joining un with happy first. That diagram then becomes like this. Uh, Unhappy is an adjective which consists of un, which is an affix, and happy, which is again an adjective. But then adding affix to this whole base, it is converted to unhappiness, which is a noun. However, this tree diagram shows different idea, that first we add ness with happy, that is, happy is the root. With happy, we join this suffix ness, converting it into happiness. And after this happiness, we added un affix with it, converting it into unhappiness. So you see the difference here. The difference here is that un is attached with happy first here in this diagram. Un is attached with happiness in this diagram. With happy in this diagram and with happiness in this diagram. So there is a little change then. So you can add this idea to it. Then you have the problem of this word unhealthiness. It is more probable that if we take root as a noun, for example, health is a noun, then we do not add un first. As we said, it is with the adjective that un is frequently used, not with the noun. Therefore, this cannot be the case that first you add un with health, making it unhealth, and then adding y to it, making it unhealthy. That is not correct. So, first you will have to add the affix with it, with the noun. If this is a noun, it is a noun. Then you will add the un prefix, making it unhappy. So in the case of unhealthy, this is important that first you add y, which is an affix, and then un, and this diagram shows this procedure. ये उर्दू में भी सुन लें. हमने अभी जो बातें की उसमें पहली बात ये की कि इससे पहले का लेक्चर था प्रॉब्लमेटिक केसेस का, इसको हमने सॉल्व किया. फिर हमने ये नेक्स्ट टॉपिक इस किताब में आता है और ग्रेडी की बुक में डेरिवेशन का, लेकिन डेरिवेशन में आपको साथ शेयर कर चुका हूँ और ये हमने योल से किया हुआ है, और चूंकि आपने सेकंड सेमेस्टर में भी किया हुआ है तो हमने उसको चुना क्योंकि इसके अल्फाज पर आपको डिफरेंट लगेंगे. ताहम ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसको आप उसमें डाल दें तो आपके पास ये ट्री डायग्राम्स उसमें आ जाएंगे एनालिसिस के लिए और ये आसानी रहेगी. फिर इसके बाद ये टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप याद करना चाहते हैं इसमें कोई मसला नहीं है. ये सिर्फ ये सफिक्सेस हैं जो लफ्ज़ के आखिर में लगेंगे और ये डेरिवेशनल हैं. ये लफ्ज़ की पार्ट्स ऑफ स्पीच को तब्दील करेंगे. रिफ्यूज़ नाउन है, रिफ्यूज़ वर्ब है, इसको नाउन रिफ्यूज़ल में चेंज करेंगे. तो इनसे अगर चंद एक आप याद कर सकते हैं इसी तरीके से. तो टॉपिक जो एक्चुअल टॉपिक है हमारा वो कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन का है, और कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन में हमने पढ़ा कि जो डेरिवेशन का प्रोसेस है ये एक से ज़्यादा मर्तबा लागू हो सकता है. मसलन अगर एक्ट के साथ आई वी ई लगाए तो एक्टिव बनेगा, ये एक मर्तबा हुआ. इसके साथ ए टी ई लगाए तो एक्टिवेट बनेगा, दूसरी मर्तबा हुआ. आई ओ एन लगाएं तो एक्टिवेशन हो जाएगी, तीसरी मर्तबा हुआ. तो ये एक से ज़्यादा मर्तबा ये अमल किया जा सकता है, और इसी अमल को एक से ज़्यादा मर्तबा जब होगा तो हमें 3 लेयर्स मिल सकती हैं. एक लेयर, ये दूसरा लेयर और ये तीसरा लेयर. तो मुख्तलिफ लेयर्स हमें मिलेंगी डिपेंड करते हुए कि आपने कितनी मर्तबा इसको ऐड किया है. इसके बाद ये एक मसला हमने हल किया कि ये जो लफ्ज़ है आया इसका हैप्पी ये रूट है, आया हम पहले अन लगाएं और अनहैप्पी के साथ फिर नस लगाएं या नहीं, पहले हैप्पी के साथ नस लगाएं और फिर अन लगाएं. तो ट्री डायग्राम दोनों का मुख्तलिफ होगा. फिर हमने ये भी कहा कि जो एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ हम अन शुरू में लगाते हैं तो ये डायग्राम ज़्यादा मुनासिब होगा. लिहाजा
इसमें हम हैप्पी रूट को लेते हैं जो कि एडजेक्टिव है, इसके साथ एफिक्स लगाते हैं, अनहैप्पी बन जाता है जो कि फिर एडजेक्टिव है, फिर हम इसके साथ नेस लगाते हैं जो कि एफिक्स है, तो ये नाउन बन जाता है अनहैप्पीनेस। ये डायग्राम इससे मुख्तलिफ कहानी शो करता है। हमारे पास रूट हैप्पी है, इसके साथ पहले हम नेस लगाते हैं तो हैप्पीनेस मिलता है, ये एडजेक्टिव है, ये एफिक्स है, ये नाउन बन जाता है हैप्पीनेस। फिर हम इन नाउन के साथ अन लगाते हैं एफिक्स, तो दोबारा इसको नाउन बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसी तरीके से हमने इसका जिक्र किया हेल्दी का। अगर हम हेल्दी को रूट ले लें तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है, और हमने कहा था एडजेक्टिव के साथ जो है अन आसानी से लगा सकते हैं। तो हम जो नाउन होगा उसके साथ पहले एफिक्स लगाएंगे, यहाँ पे सफिक्स है वाई, तो ये हेल्थी बनेगा, और फिर इसी वजह से ये इकट्ठा है इधर डायग्राम में, और फिर इसके साथ अन लगाएंगे एफिक्स है और ये नेगेटिव हो जाएगा अनहेल्दी। अब मैं इसको रीड करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। Complex derivations, since derivation can apply to a word more than once, derivation एक से ज्यादा मर्तबा हो सकता है। It is possible to create words with multiple layers. तो बहुत सारी लेयर्स के साथ अल्फाज को बनाया जा सकता है। देखिए 3 लेयर्स है, एक लेयर, ये दूसरा लेयर और ये तीसरा लेयर। तो ये मुख्तलिफ लेयर्स बनेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के, एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एज कैन बी सीन हियर, आप यहाँ देख सकते हैं, ईच लेयर ऑफ स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स द अटैचमेंट ऑफ एन एफिक्स। हर लेयर जो है ये एफिक्स की अटैचमेंट जाहिर करता है। ये एक लेयर है तो ये अटैचमेंट, ये दूसरी लेयर है तो ये नेक्स्ट अटैचमेंट, ये तीसरी लेयर है तो ये नेक्स्ट अटैचमेंट। तो ये अटैचमेंट जाहिर करता है ऑफ एन एफिक्स टू ए बेस ऑफ द अप्रोप्रिएट टाइप। अप्रोप्रिएट टाइप यहाँ पे एक्ट है, इसके साथ IVE, यहाँ पे एक्टिव है, इसके साथ ATE, यहाँ पर एक्टिवेट है, इसके साथ ION। ये अप्रोप्रिएट का मतलब है मुनासिब। इन द डीपेस्ट लेयर द एफिक्स IVE attaches to the verbal base act to give adjective। और डीपर से मुराद ये एक्ट अगर हम ले लें तो इसके साथ IVE लगाया है, इससे एक्टिव बन गया है जो कि एडजेक्टिव है। इन द नेक्स्ट लेयर ATE attaches to the adjective and converts it into the verb activate। इस एक्टिव के साथ ATE इस लेयर में लगाते हैं तो ये एक्टिवेट बन जाता है। फाइनली FXION इज एडेड, आखिर में ये ऐड करते हैं, और इस एडिशन के बाद कन्वर्टिंग द वर्ब इनटू द नाउन एक्टिवेशन, और ये जो वर्ब है ये नाउन एक्टिवेशन में चेंज हो जाता है। इन सम केसेस, बाज केसेस में द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वर्ड मे नॉट बी सो ट्रांसपेरेंट। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इतना वाज़ेह नहीं होता, इतना क्लियर नहीं होता। The word unhappiness, for instance, could apparently be analyzed in either of the ways indicated in figure 4.7। इस फिगर में जो बताया गया है, फिगर का नाम आप एग्जाम में चेंज करेंगे, the following फिगर लिख सकते हैं। तो इसमें ये दोनों तरीके एनालिसिस के लिए हो सकते हैं। However, by considering the properties of the affix un and ness, लेकिन अगर हम un और ness की क्वालिटीज देखें, it is possible to determine the structure in figure 4.7a is the right one। तो फिर हमें पता चलेगा कि right one A है। The key observation is, मुनासिब ऑब्जर्वेशन यही है that the prefix un ये combines quite freely with the adjectives but not with nouns। एडजेक्टिव के साथ फ्रीली आता है, नाउन के साथ ये फ्रीली नहीं आता है, एज शोन इन द फिगर। तो ये डायग्राम आपने सीख लिया है, और ये नाउन के साथ फ्रीली नहीं आता, ये एग्जाम्पल है। मसलन ये अन एडजेक्टिव के साथ आ रहा है, एबल के साथ, काइंड के साथ, अर्थ के साथ आसानी से। नाउन के साथ जो नॉलेज है, हेल्थ है, इंजरी है, ये नहीं आ रहा है, ये गलत है। तो ऊपर हमने इसको किया। दिस सजेस्ट्स, पता ये चला दैट अन मस्ट कंबाइन विद द एडजेक्टिव हैप्पी, कि पहले अनहैप्पी के साथ कंबाइन होगा, ये हेल्थी के साथ नहीं, सॉरी, ये हैप्पी के साथ कंबाइन होगा। इधर अन पहले इस डायग्राम में और नेस बाद में। बिफोर इट इज कन्वर्टेड इनटू अ नाउन बाय द एफिक्स नेस, कबल इसके कि नेस लगाएं।
एग्जैक्टली एज डिपिक्टेड इन फिगर 4.7a में जैसे बताया गया है। तो ये डिफरेंट है, चूंकि ये हेल्थ नाउन है तो इसके साथ अन पहले नहीं लगाएंगे, पहले वाई लगाएंगे जो कि सफिक्स है। बाय कंट्रास्ट इन वर्ड such as unhealthy, the prefix un can be attached only after the suffix has been added to the root. Suffix y लगाने के बाद इसको अटैच करेंगे। That is because y turns nouns into adjectives, y noun को एडजेक्टिव में तब्दील कर देगा, तो फिर एडजेक्टिव के साथ हम अन लगाएंगे, as in wealthy and cloudy, creating the category of word with which un can combine. तो हमने कैटेगरी इंट्रोड्यूस की हेल्थी जो कि एडजेक्टिव है, ताकि अन उसके साथ अटैच हो जाए। तो ये टॉपिक था आपका कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन। थैंक यू एंड गुड लक।